Okay, let's start. So, in the last class, we were talking about the line diagrams. ठीक है, line diagrams की बात कर रहे थे, and we were talking about the questions that can be solved using line diagram. So, line graph बोलते हैं. So, line graphs हमने last class में खत्म किए थे. Line graphs. And then second topic we started with was the tables. Right. अब ये दोनों चीजें आती है हमारे पास data interpretation के अंदर. These are a part of data interpretation. गेट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन. तो देयर हाई चांसेस कि जब भी मैथ्स या एप्टीट्यूड या क्वांट पूछा जाता है तो उसके साथ डीआई का एक क्वेश्चन डाल देते हैं साइड में. दीज आर अबाउट टू एनालाइज द डेटा. ये जो टॉपिक्स हैं ये किस चीज के बारे में, तो आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ होगा, आपको एनालाइज करना है. बहुत सिंपल होते हैं. देयर इज नथिंग एनीथिंग लाइक इतना बड़ा कुछ नहीं होता. आप लोगों को मैं बोल सकता हूँ कि रॉकेट साइंस नहीं है, बिकॉज़ यू आर इन द सेम फील्ड. सो ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है जो आपको करना है यहाँ पर. यू जस्ट नीड टू हैव अ ओपन आईज कि कहाँ से कौन सा डेटा है, किसकी बात हो रही है, एवरेज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज है, किसको कंपेयर करना है, क्या चीज कंपेयर करनी है. दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू. सो विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइन ग्राफ्स एंड टेबल्स टुडे. सॉरी, पर्टिकुलरली टेबल्स की बात करेंगे हम आज. एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज ग्राफ्स, बार ग्राफ्स. ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे कौन कौन से टाइप के बार ग्राफ्स. Let's move forward and start solving some of the questions. Okay. So एक ग्राफ हमको दिया हुआ है where total revenue of 5. ठीक है, 20 डेटा सेट्स हैं गिवन. ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका स्कोप कितना है. ठीक है, तो जितना ज्यादा डेटा दिया होगा it will take more time. It will take more time to solve और identify कि क्या निकाला गया. Now you have to find out what was the total revenue of the company D from 2000 to 2003. तो total revenue निकालना है. You know what you are supposed to do. So D है, D के अंदर revenues हमें दिए हुए over the years. You are supposed to find out total revenue. What will be the total revenue? $34. 26 plus 16 plus 3 plus 9. Right. So आप add करो 16 plus 6 22 and 3 25 and 9 34. That's really 34 million. तो जैसे मैंने बोला, ओनली थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू चेक द डेटा. यहाँ पे डेटा आपको कैच करना है. इसमें आप बोलोगे सर है तो सिंपल, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है. यस, देयर इज नथिंग, बट आई हैव सीन पीपल मेकिंग मिस्टेक्स ओवर हियर कि वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि हमें रो देखनी है या कॉलम देखनी है. ठीक है, तो किस टाइम पे क्या देखना है, दैट इज द ओनली थिंग यू शुड. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सो लाइक गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस. आज हम फटाफट क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी डन ओरली इवन. तो आपको शायद पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली खत्म कर सकते हैं ऐसे होंगे. What was the revenue of all the companies in year 2002? 2002 की बात हो रही है. This is the year we are supposed to talk about. इसके अंदर सब कंपनी का रेवेन्यू निकालना है हमें, ऑल ओवरऑल रेवेन्यू निकालना है. सो इन सब का हमें सब निकालना होगा. Right. So this will be equal to 8 plus 16 plus 4 plus 3 plus 10. 41. So 16 and 8, 24, 28, 31 and 10, 41. That's correct. $41 million. Okay. Pretty simple. You just need to identify the data. Let's increase the level. Yes, we'll increase the level step by step. So from 2000 to 2003, in which company was there a continuous increase in the revenue? तो 2000 से 2003 तक कौन सी कंपनी ऐसी थी जिसके रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था? Company B. वेरी गुड, दैट्स करेक्ट. सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है बिकॉज़ इट इज डिक्रीजिंग. ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ. दिस इज इंक्रीजिंग, सो दिस गोइंग टू बी दैट. ये खत्म हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है. दिस इंक्रीजेस बट दिस डिक्रीजेस ओवर हियर. ये इंक्रीज हो रहा है बट ये यहाँ पर
only B is the company जिसका revenue जो है that is continuously increasing. There is no calculation required over here. कुछ calculate नहीं करना है, just need to give the answer simply. This is a good question. What was the percentage decrease in the total revenue from 2001 to 2003? ठीक है, अब इन्होंने क्लियरली बता दिया that there is a decrease. ठीक है, और परसेंटेज डिक्रीज हमें निकालना है, बट इन्होंने क्लियरली बता दिया कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है. वी नीड टू मेक इट इन सच अ वे. हम यहाँ पर एक क्रॉस चेक ऐसा कर सकते हैं कि भाई जब हम टोटल करें सो दिस शुड बी लेस, लाइक 2003 का जो आंसर आना चाहिए वो लेस आना चाहिए. टोटल रेवेन्यू की बात की है, सो वील फाइंड आउट दिस वन एंड दिस वन. 2001 की अगर मैं बात करूं सो 2001 में टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, रेवेन्यू 2001 हो जाएगा 17 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 30 80. 80. अगर मैं 2003 की बात करूं it will be 18 plus 20 plus 2 60. 60. So 2001 का टोटल मिल गया, 3 का टोटल मिल गया. डिक्रीज हम पहले निकाल लेते हैं कि डिक्रीज कितना हुआ है, तो यहाँ से सिंपली दिख रहा है मैं 80 से 60 पहुंचा है, सो इट विल बी $20 million डिक्रीज हुआ है. पर ये हमें कैसे निकालना है, वी हैव टू डिफाइन दिस इन परसेंटेज. परसेंटेज डिक्रीज. अच्छा, यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टिंगली देखोगे ना, जब आंसर जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उसके अंदर 20 भी होगा. सो इफ यू फाइंड आउट 20, अगर आप जल्दीबाजी में हो तो सिंपली 20. सर 2001 में 90 होगा. Yes, 90. यहाँ पर आंसर चाहिए. It's 90, 90 और ये हो जाएगा 30. अच्छा, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हो तो एक 30 भी आंसर में ऑप्शन होता है. क्या अगर आप जल्दीबाजी में हो, अगर आपने इधर उधर नहीं देखा होगा कि हमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, सिंपली 30 है तो 30 पे टिक करके आ जाएंगे कि हाँ 30 इज द करेक्ट आंसर. 30 इज द डिक्रीज. बट किसके रेफरेंस पे लेना है, तो मैंने बताया था हमेशा कि इनिशियल वैल्यू जो 2001 की वैल्यू होगी उसके रेफरेंस पे लेंगे, यानी कि 90 into 100. 1 by 3 into 100 यानी कि 100 by 3, which is 33. 1 by 3. This will be your final answer. Simple है, just you need to find out the sum of the question, the numbers जो हमें दिए हुए, and you can find out the answer. Let's move on to the next one. So हमें दिए हुए ईयर, हमें import export दिया हुआ है, डेफिसिट दिया हुआ है. ठीक है, what is deficit? Deficit is basically the difference of import and export. तो हम बाहर कितना सामान बेच रहे हैं और कितना मंगवा रहे हैं. तो अगर हम मंगवा ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, so there is a deficit. There is always a deficit जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, तो import को export से माइनस करेंगे तो deficit है. So which of the following showed an increase in every year? ये कौन सी चीजें वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है? Imports. सो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, आप हो जा रहा है डिक्रीज, तो ये तो नहीं बनेगा. एक्सपोर्ट्स का है नहीं. सो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन क्लियर हो गए आपके, एक तो एक्सपोर्ट चला गया, ऑल ऑफ द अबव भी चला गया, वो भी नहीं हो सकता. इंपोर्ट्स और डेफिसिट दोनों में से कोई भी एक चीज देखनी है. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंपोर्ट ही बनेगा, बिकॉज एक्सपोर्ट सॉरी यस डेफिसिट में भी ये चीज आ जा रही है कि ये इंक्रीज हुआ और यहाँ पर जाकर डिक्रीज हो जा रहा है, तो डेफिसिट में नहीं आएगा, ये भी चला गया आपका ऑप्शन. Import check करना हो, so it is always increasing over the years. Imports will be the correct. Let's move on to the next one. Yes, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. In which year the ratio of imports to exports was maximum? ठीक है, import to export ratio निकालना है आपको. Import to export. अब हर एक ईयर के लिए निकालने का कोई मतलब नहीं है. What you can do is तो क्वेश्चन में दिए हुए उनके लिए निकालते हैं. So 1991 से 92 का, 92 से 93 का, 93 से 94 का, अच्छा 90 से 91 90 से
फाइंड आउट दीज रेशियोज क्या होंगे। तो पहला हम निकालते हैं 91 92 यानी कि ये वाला यानी कि 11 606 अपॉन 5790। 92 से 93 यानी कि 13 आया 3750 ओवर 8019। 93 से 94 14 14110 ओवर 6756 और 90 की अगर हम बात करें तो ये रहा 8248 over 4661। Now you need to divide this and tell me the value in ratio decimals। क्या वैल्यू आएगी आप मुझे बताना। Yes, what will be the answer of 91 92? 2.004. 2.004। Okay. 92 से 93 1.71. 93 से 94 2.08. 90 से 91 1.76. कंपेयर करना काफी इजी हो जा रहा है। दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए 2.004 और 2.08। तो यहाँ पर जीरो ज्यादा है सो ऑब्वियसली दिस विल बी लेस। ये सिंपल तरीका होता है समझने का। बाकी अगर आप इसको देखने जाओ तो 2.080 हो जाएगा। 2.080 80 आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है डेसिमल्स के पीछे। 80 is obviously greater than 04। So 93 से 94 this will be a correct answer or A is going to be a correct answer। Let's see the next one। Same question, same data। The question is different, sorry, data is same। Percentage increase in exports over previous year was maximum in which year? पिछले साल से कंपेयर करना है और हमें चार चीजों को करना है। किसको करना है? कम एक्सपोर्ट्स को करना है। ठीक है, तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। सो 90 91 की बात करते हैं, 91 92 की बात करते हैं। सो व्हाट वाज द इंक्रीज? इंक्रीज हुआ था 90 से 91 में आना है, मतलब 11606 माइनस एक्सपोर्ट्स की बात करनी है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। 91 से 92 में जो इंक्रीज हुआ है दैट विल बी 5790 minus 4661 divided by initial value। Initial value is your 466 into 100, that will be a percentage increase। Then 92 से 93 की बात करें, 92 से 93 मतलब 8019 over 5790 divided by 5790 into 100। थर्ड जो है वो आएगा हमारे पास 94 से 95, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10420 minus 6756। See, we are always comparing it with the previous year। Divided by 6756, this is going to be reference, multiplied by 100। and last बात कर लेते हैं 95 से 96, becomes 12550 minus previous year is 10420 divided by 10420। I need to solve this one and tell me what is the answer। $94 to $95. Okay, 94 से 95, this is the answer that we are getting। So what is the percentages that you are getting? 91, 24.22, 38.49,
54.23 and 20.44. 20.44. So, let's move forward. See the next question. Simply, calculation is too good over here. बाकी तो कुछ नहीं question है. What was the total trade deficit for the last 3 years? Total deficit निकालना है. Last 3 years. कौन-कौन से 93, 94, 95. इसका ट्रेड डेफिसिट सिर्फ आपको डेफिसिट पे काम करना है, ठीक है. तो ये तो है, ये सेक्शन तो है, इसमें भी लास्ट 3 साल का डेफिसिट है. बेसिकली 7354 should be added with 7880. It should be added with 746. Two two 694. देखो क्वेश्चन आपका कहाँ पे खत्म होता है मैं आपको बताता हूँ. तो जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इन तीनों को मुझे ऐड करना है, if I add the unit digit, so 4 plus 0 plus 0 4 आया. Now चेक कर लो चारों में से सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसका unit digit 4 है, that is multiplier. There's no need to use calculator or anything. डायरेक्ट आंसर वही निकाल देते हैं. आगे जो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. मन की तसल्ली के लिए करना हो तो कर सकते हो. बाकी यहाँ पर यूनिट डिजिट से डबल चल जा रहा है कि यही आंसर है. ठीक है. 777 7000 3 बार 21000 से ऊपर होगा, so 18000 is eliminated. अब 300 800 400, so 8 3 11 12 13 14 15 1500 1600 के आसपास ये होगा. so 21000 1600 ऊपर, तो 22000 जा रहा है, तो ये भी चला गया. 1600 ऊपर यही आंसर है. ये भी ये तो 24000 बहुत ज्यादा हो जाएगा. so ये एलिमिनेट भी हो सकते हैं सिंपली अगर आप देखे जाओ, और यूनिट से भी सॉल्व हो सकते हैं. Let's see the next one. The difference between imports and exports was maximum in which of the? $94 to $95. Yes, okay. So thing is, you need to understand क्या समझना है यहाँ पर कि मैं deficit क्या मतलब क्या होता है. Deficit का मतलब समझ लिया तो इस क्वेश्चन के लिए easy हो जाता है. It is a difference between imports and exports. इसका difference. And this is what has been asked. Basically हमको निकालना क्या है, हमको deficit निकालना है कि maximum deficit कहाँ पर है. तो सब में सबसे ज़्यादा deficit है 94 95 में. Right? And ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है, so this becomes a correct answer 94. ठीक है. There is no need to calculate the difference between imports and exports in each of the case. So this is a different data. क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें क्रॉप्स दी हुई अलग अलग टाइप की, और कौन कौन से सेल में कितना प्रोडक्शन हुआ था. Now we are supposed to find out some of the solutions. So what was the total amount of crops produced in 2002 and 3? 2-3 के अंदर हमारे पास टोटल क्रॉप प्रोडक्शन कितना हुआ था. हमारे पास 5 टाइप की क्रॉप्स दी हुई है क्वेश्चन के अंदर. इनका टोटल प्रोडक्शन पूछा हुआ है. सो बेसिकली हमें क्या करना है, वी नीड टू ऐड देम. ये हो जाएगा आपके पास 28.2 प्लस 52.4 प्लस 90.8 प्लस 172.5 प्लस 158.4. 502.3.
just 1 minute. Can you repeat your answer? 502.3. That's correct. It's 502.3. जो भी यूनिट क्वेश्चन में दी हुई है, the value is going to be 502. Let's move on to the next one. What was the total production of rice? अच्छा यहाँ पर year हमें दिया हुआ नहीं है, so we'll forget about the years and we'll be focusing about the rice only. तो rice की बात करनी है हमें. Rice के केस में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, we need to add them. 438.4. Yes. 438.4. That's correct answer. 438. Let's move forward. Question of which type of crop was always increasing in the given years? Yes, can I get some answers? Sir, सब में decrease हो रहा None है. of the above. See, अगर आप ध्यान से देखोगे, so it increases over here, increases over here, but decreases. यहाँ से increase हुआ, this increases, even increases over here, but at the end it decreases. Increases, then it decreases. ये भी same है. Increase हुआ, then there is no crop which is continuously increasing over here, so none of the above or none of the given crop. कोई भी नहीं होगा. That is you need to understand. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया होता है none of the above, none of the given options. So इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि ये दिया हुआ है तो इसको हम यूज कर सकते हैं. अच्छा, इसको यूज करने के लिए काफी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है. So you need to check out कि सब ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं है. And we have analyzed all the given options. Let's move on to the next one. Yes, what was the average production of oats in the given year? Average production निकालना है. So average की बात हमने से पहले की थी. Average is sum of the number of observations. Sum of observations. ऐड कर देना है, सम बन जाएगा 40.52. That's the correct answer. So add them up and 2.4 plus 40.8 plus 52.4 plus 42.4 plus 34.6 divided by number of observations मेरे पास हो जाएगा 5 बस 5 साल की एनालाइज किया हुआ. When you find out the average, that is going to be equal to 40.5. Let's move ahead. Production of wheat was what percentage of total production in 2002? So हमें बात करनी है दो चीजों की. एक तो बात करनी है wheat की और दूसरी बात करनी है 2002-3. या बस wheat यहाँ पर and 2002-3. ये जो अमाउंट आ रहा है that rises to 158.4. ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ wheat था in 2003 it was 158.4.
है, टोटल प्रोडक्शन हमें निकालना है, सो वी नीड टू ऐड एवरीथिंग 132 130.2 146.8 plus 158.4 plus 141.6 plus 138.3. 31.53. हमारे पास न्यूमरेटर में रहेगा 158.4, डिनोमिनेटर में जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू आई गेस 502.3 which is equal to 31.53. That is the correct answer. Very good. 31.53. This is your correct answer. Okay, let's see the next one. Now in this question, अलग-अलग टाइप की चीजें दी हुई है आपको, like category of assistance. There are different categories based on which the government or the other people they are helping some of the peoples. So category हमारे पास 5 कैटेगरी दी हुई है, तो 5 कैटेगरी के हिसाब से हमें असिस्टेंट दिया जाएगा. एवरेज नंबर ऑफ पीपल रिसीविंग हेल्प इन 95 एंड 96 होती है भाई कि कितने लोगों को हेल्प मिली है. टोटल कॉस्ट कितना पड़ा था इन करोड़ 95 96 हेल्प का, वो दिया हुआ है. एंड कॉस्ट पेड बाय सेंटर, वो हमें दिया हुआ है. तो द कैटेगरी रिसीविंग द लीस्ट परसेंटेज हेल्प फ्रॉम द सेंटर इन द एंटायर डेटा. परसेंटेज है तो लीस्ट परसेंटेज पूछा है और ऊपर से सेंटर पूछा है, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है. तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा. परसेंटेज निकालने के लिए वी हैव टू कंपेयर इट विद सब स्टैंडर्ड डेटा. परसेंटेज के लिए एक रेफरेंस चाहिए होगा, वो भी लीस्ट हमें निकालना है. एंड दूसरा हमें सेंटर के डेटा को कंपेयर करना है, तो सेंटर का परसेंटेज निकालना है. लेट्स ट्राई टू डू दैट. हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. सो चार चीजों की बात की हुई है कैटेगरी बी इन 1995, इसको हाईलाइट कर लेते हैं सो दैट इट बिकम्स क्लियर. कौन कौन सी चीजों की बात करें. कैटेगरी बी इन 1995, दिस इज कैटेगरी बी ऑन 1995. तो कौन कौन सी चीजें हैं, ये है, एक ये डेटा दिया हुआ है, एक ये डेटा दिया हुआ है, तीन डेटा में दिया. देन कैटेगरी सी इन 1996, so कैटेगरी सी के अगर बात करूं 96 में ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है. विल टॉक अबाउट कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, उसके बात करेंगे. देन कैटेगरी बी इन 1996, बी इन 1996 B96 में है, so this is this one. And category D in 1995, category D in 1995, so D में 1995 में ये डेटा हमें दिया. अब मुझे निकालना है परसेंटेजेस, सो सेंटर के परसेंटेजेस. सो लेट्स फाइंड आउट द सेंटर परसेंटेज. सेंटर के परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे. परसेंटेज ऑफ सेंटर टू टोटल कॉस्ट. तो बेसिकली ये दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट कितना था, उसमें सेंटर ने कितना पे किया, बाकी बचा हुआ स्टेट ने पे किया होगा. दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर. तो हमें सेंटर का परसेंटेज टू टोटल कॉस्ट निकालना है इन चार कैटेगरीज के लिए. तो पहले पहले की बात करते हैं, ए की बात करते हैं. तो ए में कितना है, बी का 1995 वाला डेटा है. तो इसमें सेंटर ने कितना दिया है 2.6 और टोटल कॉस्ट कितना हुआ है 5. परसेंटेज हम निकाल सकते हो. बी की बात करते हैं कैटेगरी सी 1996, सेंटर ने कितना दिया हुआ है 10, टोटल लॉस कितना है 59.4. सी की बात करते हैं, सी में क्या है. सो कैटेगरी बी ऑफ 1996, यहाँ पर सेंटर ने दिया है 1.6 और ये हो गया 3.2. 200 इसका टोटल कॉस्ट आप निकाल सकते हो, और सही परसेंटेज आप निकाल सकते हो. लास्ट दिया हुआ है कैटेगरी डी इन 1995, सो सेंटर ने दिया है 6.6 एंड 26.
these are the answers. अगर आप देखने जाओ so you can solve this one. I want you to solve this one, but उससे पहले I want you to pay attention over here. देखो 26 है तो 2.6 by 5. So basically 2.6 is somewhere nearby half of 5. 2.5 के half. So ये percentage होगा that is a little over 50%. 50% से थोड़ा सा ऊपर होगा 52% के आसपास. ठीक है. This is 10 by 59 और 10 by 60 अगर आप मान के चलो तो 1 by 6. 1 by 6 और in 100 is 16%. ठीक है. तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होगा. ये आपका 50% से थोड़ा सा प्लस होगा. ठीक है. ये जो होगा आपका आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट वैल्यूज. ठीक है. वो आपको निकालनी है. 10 by 60 अगर आप मान के चल रहे हो तो 1 by 2 1 by 6 होता है. 1 by 6 by 100 यानी कि 16.67% के आसपास. मतलब उसके आसपास होगा. ये 16 by 32 एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. 16 by 32 1 by 2 यानी कि दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 50%. और ये 6.6 by 20 26.4 6 को 7 मान लेते हैं. 26.4 को तो 28 मान लेते हैं. तो 7 by 28 यानी कि 1 by 4 into 100 यानी कि 1 by 4 into 100 यानी कि 25%. ठीक है. नाउ यू कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यूज. लेकिन अगर आप कंपेयर करने जाओ सो यू जस्ट नीड टू कंपेयर ए एंड सी. बी और डी तो वैसे एलिमिनेट है क्योंकि वो बहुत कम है. इसमें भी जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए बिकॉज इट इज 50 प्लस. जबकि जो सी है दैट इज एग्जैक्ट 50. So A will be your correct answer. Now can you tell me what is the exact answer you are getting? In first 52. 52. 16.83. In third 50 and fourth 25. Exact 25 is correct. So you can see that आप इसको solve करना चाहो you can solve it. You can give time. Or else if we want to save time, this is how we do it. So we go to the closest values instead of going to direct decimals को solve करना it is difficult. It takes a lot of time. You can't do it orally. ठीक है. तो आपको कैलकुलेटर यूज करना, जो कि कैलकुलेटर अवेलेबल है, ऐसा नहीं है हमारे पास. वी हैव कैलकुलेटर इन गेट एग्जाम. सो वो एक इशू नहीं है. लेकिन कैसा कैलकुलेटर है, उसका इंटरफेस कैसा है वो आपको पता है. सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग. उस इंटरफेस को यूज करना इज टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है. तो इस केस में यू कैन यूज शॉर्टकट्स. अब इस शॉर्टकट्स में एक कंफ्यूजन ये होती है कि बहुत बार क्लोज आंसर आते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला 50 है, यहाँ पर 50. सो मैंने दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए. फॉर दीस टू ऑप्शंस आई कैन कंफर्म द आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. मुझे 4 कैलकुलेशन के बदले सिर्फ 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ. Right. So this is the trick that we use. Let's move on to the next one. Data isn't say the difference between average cost paid by the center during 95 and 96 is. अच्छा, क्या क्या निकालो, कौन सा चीज निकालो. Let's see. पहले तो है average cost paid by center during 95 and 96. उसका हमें डिफरेंस निकालना. तो पहले तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिर एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा. दो जगह के लिए, 95 के लिए, 96 के लिए. देन वी कैन फाइंड आउट करेक्ट आंसर. तो डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट फॉर 1995. while doing this thing just make sure कि आप सिर्फ सेंटर की बात कर रहे हो. ठीक है. because we are interested more in the money given by center. So, average cost of 1985, average cost of 1996, and then you have to find out the difference.
ऑप्शन सी 132 लाख। Okay, 132 lakhs. Right. Let's see what is the answer. So yes, you are supposed to first of all tell me what is the cost that you have seen in 1995 total cost. 19.12. Yes, that's correct. 19 point. Sorry, 19 point 19.12. 12. Yes, 12. 19.12 in 1995 fire, and that too for 26 at 1996. 20.44. 20. These two are in rupees, that two are in crore. So difference हो जाएगा 20.44 minus 19.1. Difference हो जाएगा. 1.32. This becomes 1.32 crores. ठीक है, अब ये तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है. 13.2 करोड़ दिया हुआ है, 13.2 लाख दिया हुआ है, 1.32 करोड़ नहीं दिया हुआ. But when you multiply it by 100, you get 132 lakhs. So yeah, option C becomes the correct answer. ठीक है. Just converting this crore into lakhs related things. Let's see the next one. Monthly cost of the city receiving E category assistance in 1996 is nearly. Okay, I'll just make this question a bit easier over here. rather than- So you are supposed to find out monthly cost first of all. The cost yearly दिया हुआ है, you have to convert it into monthly cost to yearly cost. This is yearly cost. You are supposed to find out monthly cost of the city which is receiving E category. ठीक, E category की बात है तो E category पर हमें ज्यादा फोकस करना है. इसमें कौन सा डेटा दैट आई टेल यू, इसकी हम बात करने वाले हैं. इट इज असिस्टेंट इन 1996. तो 1996 में असिस्टेंट कितना है, असिस्टेंस कितना है, टोटल हेल्प कितनी मिल रही है हमें 1996 के अंदर, दैट वी आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ. सो अगर आप देखो तो 1996 के अंदर हमें ये दिया हुआ है. 1996 की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरा ऑप्शन में हम पूछा हुआ है 1995. सो वी नीड टू कंपेयर इट विद द कॉस्ट ऑफ 1995. 95 और 96 इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखने जाओ तो वन थिंग दैट इज क्लियर इज 96 का जो असिस्टेंस था वो ज्यादा है. ठीक, तो 96 का असिस्टेंस ज्यादा है, सो लेस वाले ऑप्शन जो है तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं. दिस ऑप्शन इज नॉट दिस ऑप्शन. कितना मोर है दैट वी नीड टू फाइंड आउट. सो डिफरेंस निकाल के यू नीड टू फाइंड डिवाइड इट बाय 12, यू विल गेट द आंसर. डू इट एंड टेल मी द आंसर. $2.1 crore more than that in 1990. That is the correct answer. क्या दिया हुआ है, we are supposed to find out 242.8 minus 216.6 divided by 12 करना है. This turns out to be 26.2 by 12. Now this is obviously greater than 2 because 12 into 2 is 24. So any option which is greater than 2, this is going to be a right. Divide भी करते हो, you get 2.1. Come value nearby. This is going to be a correct answer. Let's the next one. Same data. Same data is there. Monthly cost of the city of category D during 95 and 96 year ratio. Category D के अंदर monthly cost निकालना, monthly cost का ratio निकालना है. Category D के अंदर. तो monthly cost के अंदर अगर मैं बात करूँ, so cost paid by center we don't have to think of center में कितना cost bear किया हुआ है, वो हमें बात नहीं करनी है. We just need to focus on total cost.
यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन ध्यान दे दो अगर आप, तो बेसिकली हमें क्या करना है, we are supposed to analyze 95 and 96 for category D. कैटेगरी डी के अंदर टोटल कॉस्ट में भी हमें 95 और 96 को एनालाइज करना है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट देयर मंथली कॉस्ट का रेशियो। अच्छा, व्हाट इज मंथली कॉस्ट? मंथली कॉस्ट इज बेसिकली ईयरली कॉस्ट। ईयरली कॉस्ट जो होगा हमारे पास डिवाइड बाय 12, लेकिन अगर मैं रेशियो निकालता हूँ, सो ईयरली कॉस्ट ऑफ 1995 by 12 upon yearly cost of 1996 by 12, 12 is going to cancel, so monthly cost का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ईयरली कॉस्ट। ठीक है, यही एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट एनीथिंग, सो दिस विल बी इक्वल टू ईयरली कॉस्ट ऑफ 1995 डिवाइडेड बाय ईयरली कॉस्ट ऑफ 1996, which will be equal to 95 by 26.4 and 6 by 42.6. अच्छा, is what will be the answer? Option D. Yes, that is fine. तो क्या हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसके क्लोजर वाले नंबर हमें ढूंढने हैं और कुछ नहीं। तो अगर आप या तो डायरेक्टली आप डिवाइड करके लिख सकते हो, आई गेस कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, सो इट्स ओन कैंसिल आउट। हाँ, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, 26 के बाहर आ रहा है मेरा 24 और 42 के पास आ रहा है 40, पास में आ रहा है, तो मैं दो दो माइनस करता हूँ, इट इज इक्वल 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 3 is to 5, so 3 is to 5 will become, ठीक है। अब इन्होंने इस फाइनल आंसर, अगर आप इसको डिवाइड करके करना चाहते हो दैट आल्सो यू कैन डू। तभी यहाँ पर देखिए, ये तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी समवेयर नियर 1.67, ग्रेटर देन 1, जो इस केस में पॉसिबल नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ये जो हो जाता है ये भी 1.5 हो जाता है, ग्रेटर देन 1, ये भी एलिमिनेट हो गया। ग्रेटर देन 1 तो एलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज़ इट इज गोइंग टू बी लेस देन 1, और कितना लेस है दैट वी नीड टू फाइंड। ठीक, 2/3 है या 3/5, ये दो चीजें कंपेयर करनी है, then you'll get the answer. Okay, let's move on to the next one. Let's see the next question. Yes, this is a good question with a good amount of data. So data ज़्यादा है तो time ज़्यादा लगेगा, obvious सी बात है। So year has been given, there are different states जो हमें दिए हुए हैं, और अलग-अलग year में कितने लोगों ने एक particular exam में appear किया था, उसमें से कितने qualify हुए थे, वो हमें data पूरा दिया हुआ है। Now total number of candidates qualified from all the stages together in 1997 is approximately of what percentage of total number of candidates qualified from all the states? Three states होना चाहिए together in 1992। हमें क्या करना है, हमें डेटा को एनालाइज करने से पहले डेटा को समझना जरूरी है। अगर आप डेटा को समझ लोगे तो वहाँ पर आधा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो पहले पूछा हुआ है क्वालिफाइड, क्वालिफाइड की कैटेगरी अलग है। क्वालिफाइड इन ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 1997, 1997 के अंदर क्वालिफाइड वाले ये पूरी कैटेगरी बन रही है मेरे पास, और इसको मुझे कंपेयर करना है किससे, इट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अगेन क्वालिफाइड वाले ही देखते हैं मुझे, फ्रॉम ऑल स्टेट्स टुगेदर इन 1998 के अंदर क्वालिफाइड वाले मुझे, इनको ऐड करके इसका मुझे परसेंटेज निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटा आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, आपको किस चीज का क्या निकालना है, देन ओनली यू कैन डू दिस। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो पहले को ऐड करेंगे आप, दैट विल बी 720 प्लस 840 प्लस 780 प्लस 950 प्लस 870, एक हो जाएगा डिवाइडेड बाय, सेकंड वाले केस की बात अगर करूँ तो 980 प्लस 1050 प्लस 1020 प्लस 1240 प्लस 940, ये जो आंसर आता है डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। 80%. नियर बाय 80%। सो अगर आप न्यूमरेटर का सम करते हो, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? 4160. वेरी 4160, एंड डिनोमिनेटर का सम करोगे तो
5200. यहाँ पर 5.30 आ रहा है। So if you find out the percentages, it will be 79.5. To be precise, nearby 80%. It approximately कुछ हुआ है, so yes, option will be 80%. Then कैसे टाइप का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है. Numerical ability क्वेश्चन टाइप होते हैं, तो उसमें आपको वैल्यू इनपुट करनी है. You have to be careful with that. So this is how you get the answer. Let's see the next one. Okay, the question is different. Data is same. What is the average number of candidates who appeared for the state queue during the given years? Okay, क्या निकालना है हमें? एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालना है who appeared. देखो appeared अलग है, qualified अलग है, and we have to focus on state queue. So queue की बात करनी है और appeared की बात करनी है. Three, two, we have to find out the average of these five data. That's it. Average will be 8100 plus 9500 plus 8700 plus 979. That's the correct answer. 8990. Your final answer for this average, this simple calculation will be 8990. Let's see what is the next question. In which of the given years the number of candidates that appeared from state P has maximum percentage of qualified candidates? ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमें बात करनी है वो बात करनी है इसकी स्टेट पी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेट पी. उसके अंदर हम अपीयर्ड और क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का परसेंटेज निकालना है हमें फॉर स्टेट पी फॉर ऑल द इयर्स. जो 5 ईयर हमें दिए, सॉरी 5, वैसे हम 5 दिए हुए, ऑप्शन के अंदर 4 ही दिए हुए, सो वी विल टॉकिंग अबाउट 4 इयर्स. कौन कौन से हैं? 1987, 1998, 1999 एंड 2000. 97 की अगर मैं बात करूं, फॉर P, state P, number of students who have qualified the exam was 780, and the total number of students who appeared were 6400. 98 की अगर बात की जाए फॉर स्टेट की, the number of students who qualified were 1020, but the number of students who appeared was 8800 into 99 की अगर बात की जाए, so number of students who qualified were 890,
number of students appear was 7833. 2001 की अगर बात की जाए उसमें हमारे पास 1250 over 975. ये चार चीजें हमको निकालनी है. We need to compare them. Solve this and let me know the answer. Got one answer in the chat box, and that is the only answer I'm getting. This one is so and so the answer that we'll be getting after this one is पहले वाले का आंसर होगा nearby 12.19%. सेकंड वाले का जो आंसर होगा that will be nearby 11.59%. थर्ड वाले का जो आंसर होगा that will be 11.41%, and फोर्थ वाले का जो आंसर होगा that will be 12.82%. ये चार को अगर आप करने जाओ so 2001 has the highest percentage and that will be a correct answer. ठीक है, this is the answer I got in the chat box. Let's move on to the next one. Combining the states B and Q together in 1998. एक साल के लिए दोनों को कंबाइन किया गया है, इसको B और Q. States B and Q together in 1998. What is the percentage of qualified candidates student of appear candidates? P और Q एक पर्टिकुलर ईयर 1998 के लिए हमें एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है. ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन. क्या है हमारे पास क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कितने होंगे टोटल? दिस विल बी इक्वल टू 1020 प्लस 1240. अपीयर स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हो जाएंगे मेरे पास 9500 प्लस डबल. इसका मुझे परसेंटेज निकालना है. यू कैन सॉल्व दिस, लेट मी नो द आंसर इफ पॉसिबल. अगर आप लोग जगह रहे हो तो 12%. प्लीज. 0.1234, 12%. Yes, 12.34%. Somewhere near the answer आएगा ऐसा कुछ. 12.34 and 35 349 आता है ऐसा आंसर. 12.35 is the correct answer. What is the percentage of candidates that qualified over the candidates that appear from state and during all the years? Qualified to appear for N during all the years. N की बात करनी है, and we are supposed to find out the total number of students qualified and total number of students appear. उसका रेशियो निकालना है. Qualified to appear. This is for state and keyword. Qualified में हमारे पास आ जाएंगे 840 plus 1050 plus 920 plus 980 plus 1020 over appear
7500 plus 9200 plus 8450 plus 9200 plus 8800. You're supposed to find out the percentage. 11.14%. That's correct. 11.14. इसके आसपास आपको कुछ आंसर करना है. Yes. Topic which was getting boring is now over. यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट डेटा इंटरप्रिटेशन के टेबल वाले जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेश्चंस थे वो खत्म किए. कैसे आपको डेटा एनालाइज करना है, यू हैव टू लुक इनटू द टेबल्स एंड फाइंड आउट सम परसेंटेज और सब. नाउ मूव फॉरवर्ड इन द सेम कैटेगरी. तो अभी हम है डीआई के अंदर तो डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, ठीक है. लेकिन इसके अंदर विल लुक इनटू सम अदर वैरायटीज. अदर वैरायटीज का मतलब क्या है, अपन बार ग्राफ की बात करेंगे. विल लुक इनटू बार ग्राफ एंड देन पाई चार्ट्स. ये दो चीजें हैं जो रह गई हैं, उनकी भी हम बात कर लेंगे. आई विल मेक श्योर कि थोड़ी कम क्वेश्चन सॉल्व करें सो दैट यू गेट द आइडिया दैट इज मोर देन. ठीक है. सो स्टार्ट विद दिस वन. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या. So basically, what is the idea of this bar graph is we have different types of bar graphs, and these are used to show you the discrete values. These are used to denote bar graph. अगर मैं बात करूं, these are used to show you discrete values. What do you mean by discrete values? Discrete values are those values which can be represented in the form of numbers. Simply जिसको हम number के form में represent कर सकते हैं, वहाँ पर ये चीज यूज होती है. तो there are various type of bar graphs जो हम अलग-अलग जगह पे यूज करते हैं depending upon application. जैसे कि जो फर्स्ट वाला है, this is your column bar chart और bar. ठीक है. तो when the data is given in the form of column, similarly this is row bar chart. ठीक है. तो बेस्ड ऑन की बार की पोजीशन कैसी है, इसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसके हिसाब से भी डिफाइन होता है कॉलम और रो बार चार्ट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बार चार्ट जहां पर यू गेट द डायरेक्ट वैल्यूज. ठीक है. तो आप डायरेक्टली कंपेयर करके यू कैन गेट द वैल्यूज. देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर डायरेक्ट वैल्यूज नहीं मिलती, रादर देन कंपैरिजन दिया हुआ होता है. ठीक है. दिस केस इज नोन एज मल्टीपल बार डायग्राम. मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर जो किसी भी दो एंटिटीज को हम आपस में कंपेयर करते हैं ऑन द सेम ग्राउंड. So over here we are comparing the profits of two company A and B on the same ground. तो 2000 के अंदर दोनों का प्रॉफिट यहाँ पर हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. 2002 के अंदर कंपेयर कर सकते हैं. So similarly this is known as multiple bar graph जहाँ पर we are dealing with multiple companies. Then there is one more type of bar graph which looks something like this. ये क्या होता है? This is known as compound bar. Compound bar diagram or compound bar. Basically इसमें क्या होता है, there are multiple things which are shown on the same bar. जैसे SUVs and Sudan दिया हुआ है. So SUVs यहाँ तक है and Sudan यहाँ से आता है. ठीक है. Sudan यहाँ से आता है. Then SUVs यहाँ तक है, Sudan यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है. So by finding out the difference we can actually calculate है कि actual में Sudan कितनी है. So अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो, this is 70, this is 20, so 50 into 1000 यानी 50,000 प्रोडक्शन थी Sudan. This is how I can find out. So ये जो चीज निकालनी होती है, that is basically we calculate it with the difference of the head. वहाँ से पता चलता है. Similarly over here also you can see this kind of graphs जहाँ पर Google Sales दिया हुआ है. This is known as compound bar diagram. अच्छा, ये compound bar diagram के अंदर एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये 6 तक जा रहा है, जैसे कि ये 6.5 तक जा रहा है, ये 7 तक जा रहा है, ये 8 तक जा रहा है. So we have different lengths of the this bars. बहुत बार क्या होता है, it is easier for us to denote the same thing on the bar graph, लेकिन कहीं-कहीं पे it becomes difficult कि भाई एक बार ग्राफ के अंदर एक वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, दूसरी बहुत बड़ी आ रही है. So we cannot like कुछ कार्स जो है 50 या 100 में आ रही है, कुछ आ रही है जो 50,000 में आ रही है. तो सेम कार पे सेम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है. So in that case we use this kind of percentage. ठीक है. तो ये जो होता है that is percentage bar diagram.
उसको बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो चीजें हमने पिछली बार देखी थी दैट इज गिवन ओवर देयर। टोटल क्वांटिटी को 100 माना जाता है, उसमें से एक जो होती है वो 80% है, दूसरी बाय डिफॉल्ट 20 हो जाएगी। द सम इज ऑलवेज, यू नीड टू रिमेंबर, सम इज ऑलवेज 100। ठीक है, व्हीट प्लस राइस इन ऑल द केसेस टोटल इट विल बी इक्वल टू 100%। ये एक प्रॉपर्टी है जो ध्यान रखी जाती है। दिस इज परसेंटेज डायग्राम। These are different types of bar diagrams that we have. Yes, we can solve one question, one or two questions quickly for today. Then we'll move on to the next question in the next class. So what is the answer we can get over here? Question has been asking which pair of years had the same revenue, average revenue, sorry, same average revenue as that of 90 and 95. So 90 and 95 का average कितना है? First of all, let's calculate this one. So average revenue of 1990 and 93 and 94. okay, 93 and 90. So देखते हैं what is the answer. So yes, that is correct. See, if you find out the average, instead of find out the average, we'll just go with the sum. ठीक है, तो 93 90 और 95 का सम कितना होगा? So 90 यहाँ पर है, 95 यहाँ पर है, so we'll have 40 plus 75 यानी कि 115. So I need to find out those pair जिसका सम 115 होगा। ठीक है, so अगर मैं बात करूँ 65 और 60 की, तो 125 ज्यादा है, 45 से अगर ऐड करता हूँ तो इट विल बिकम 110 जो कम है। 50 विल बी द करेक्ट आंसर। सो 65 और 50 यानी कि 1993 एंड 1994 ये जो पेयर होगा दे विल हैव सेम एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पर मैंने एवरेज निकाला नहीं है, तो आई जस्ट गॉन विद द सम बिकॉज़ दोनों को डिवाइड बाय 2 ही करना है, सो इट इज गोइंग टू गिव मी द सेम वैल्यू। नेक्स्ट द नेक्स्ट वन। Which year or years the percentage increase in production was maximum from the previous year? Percentage increase निकालना। अच्छा, यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो हमें क्या करना है, पहले मैं बात करता हूँ 1991 कितना इंक्रीज हुआ है, 20 विद रिस्पेक्ट टू 40 200 यानी कि 50% इंक्रीज हुआ है। अब 92 में जो है ना वो डिक्रीज हुआ है, सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस। 93 की बात करते हैं, so, वहां पर कितना इंक्रीज हुआ है, 20 विद रिस्पेक्ट टू 25। This will be less than 50%. Anything which is less than 50%. Then 94 again decrease हुआ है, so we need to no need to calculate this। 95 की बात करते हैं, so it is 75, 50 is 75 यानी कि 25 with respect to 50 into 100, so this is again 50%। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट में s दिया हुआ, this only shows कि यहाँ पर एक से ज्यादा आंसर होंगे, and that is correct। 1991 and 1995 both of the years they have increase, maximum increase than the previous year, and both of them have same increase, right? दोनों की वैल्यू जो आ रही है वो सेम आ रही है। So for what we'll do is we'll keep it up to here in today's class। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमारे पास सिर्फ बार ग्राफ और पाई ग्राफ के क्वेश्चन है। इसके बाद एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बचता है, एक्चुअली दो है। एक है सिलोगिज्म जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड ब्लड रिलेशनशिप्स। तो ये दो टॉपिक खत्म होते हैं, यहाँ पर आपका लॉजिकल रीजनिंग भी खत्म हो जाएगा। सो द एंटायर टॉपिक्स ऑफ एप्टीट्यूड व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन वो एक बार खत्म हो जाएंगे। एक इंग्लिश वाला टॉपिक है जो रहेगा, जिसके लिए व्हाट आई वुड प्रेफर इज ऑल ऑफ यू शुड हैव द बेसिक्स ऑफ ग्रामर क्लियर। ग्रामर सबको क्लियर करके रखना है। देखो एक चीज है कि वहां पर हमसे वो क्या पूछा जाता है,
So एक क्वेश्चन वोकैबुलरी का आता ही आता है, बट वोकैब ऐसी चीज है ना जिसके ऊपर गैम्बलिंग होता है। बस आप कितना भी प्रिपेयर करके जाओ, व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क यू, देयर आर न्यूमरस अनकाउंटेबल वर्ड्स इन डिक्शनरी, कौन सा पूछने वाले यू कांट से। ठीक है, वो एक चीज ऐसी होती है जिसके ऊपर गैम्बल होता है। यस, ट्राई टू रीड मेनी वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल, बट यू कांट बी श्योर कि ये अगर मैंने वोकैब ऐसा कोई चीज नहीं जिसको आप 100% कवर कर सकते। ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसमें यू कैन बी श्योर। ठीक है, तो ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जो विल सी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो कौन कौन से टॉपिक ग्रामर के अंदर होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट हैव द बेसिक्स ऑफ ग्रामर क्लियर कि कौन कौन से टेंसेस होते हैं, हाउ द सेंटेंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, वो आपको क्लियर करना है, एंड दिस विल कंप्लीट योर एंटायर एप्टीट्यूड फॉर द गेम। ठीक है, तो ये जो 15 मार्क्स हैं दैट विल बी सिक्योर्ड ऑन द गेम। ठीक है, वहीं पे कंप्लीट जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको करके रखनी है। Fine, so we'll keep it up to here in today's class. In the next class, we'll see कि थोड़े questions के practice करेंगे, and we'll look into blood relationships. So if you have any doubt, you can ask. You guys are free to leave. सर जो फर्स्ट वाली स्लाइड की बात है आपकी, हाँ,